श्री गणपती गणेशाय नमः. ओम श्री शिव महापुराणाय नमः. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. आज श्री शिव महापुराणाय द्वितीय रुद्र संहिताय तृतीय पार्वती खंडे अथेकोनचत्वारिंशो अध्यायः. नारद उवाच विधेतात महाप्राज्ञा विष्णुशिष्ये नमस्तुते. अद्भुतेयं कथा श्रावी तवतो समाविकृपानिधे. इदानीं श्रोतुमिच्छामि चरितं शशिमौलिना. वैवाहिकं सुमाङ्गल्यं सर्वाद्विनाशनं. किं चकार महादेव प्राप्ते मङ्गलपत्रिकां. तां श्रावे कथां दिव्यां शङ्करस्य परात्मना. ब्रह्मोवाच शृणु वत्स महाप्राज्ञे शाङ्करं परमं यशा. यचकार महादेवा प्राप्य मङ्गलपत्रिकाम्. अथ शम्भुर्गृहीत्वा तां मुदा मङ्गलपत्रिकां. विजहास प्रहष्टात्मा मानन्तेषां व्याधिभूहि. वाचयित्वा च तां सम्यक् स्वीचकारविधानता. तज्जनान् ज्ञापयामास बहुसम्मान्य चादरत्. उवाच मुनिर्वागस्तान् कार्यं सम्यक् कृतं शुभम्. आगन्तव्यं विवाहे मे विवाहः स्वीकृतो मया. इत्यकर्णे वचा शम्भो पृष्ठस्तस्ते प्रणयात्मा. परिक्रम्य ययुर्धाम शशिस्तं विश्वविधिं परम्. अथ देवेश्वरं शम्भुं सामारास्त्वां मुने द्रुतं. लौकिकाचारमाश्रित्य महालीलाकरः प्रभु. तव मागता परप्रीत्या प्रशंसत्वं विधिं परम्. प्रणमश्च नतस्कन्धो विनीतात्मा कृताञ्जलि. अस्तोः सुजय शब्दानि समुच्चारे मुहुर्मुहुर्. निर्देशं प्रायस्तस्य प्रशस्तत्वं विधिं मुने. ततः शम्भु प्रहष्टात्मा दर्शयालौकिकीं गतिम्. उवाच मुनिवर्ये त्वां प्रणिच्छ भयागिरा. शिवोवाच प्रीत्या शृणु मुनिश्रेष्ठ. रासेतोऽद्य वदामि ते. ब्रुवे तत्त्वां प्रियो मे यद्भक्तराजशिरोमणि. कृतं महत्तपो देव्या पार्वत्या तव शासनात्. तस्य वरो मया दत्ता पतित्वेतोषितेन वे. करिष्येऽहं विवाहं च तस्यावश्य हि भक्तिता. सप्तऋषि शब्दा तच्च तलङ्घनं शोभितच्च ते. अदत्तः सप्तमे चाह्निं तद् भविष्यति नारदा. महोत्सवं करिष्यामि लौकिकीं गतिमाश्रिता. ब्रह्मोवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य शङ्करस्य परमात्मना. प्रसन्नधि प्रभुं नत्वा तात तवमं वाक्यमब्रवी. नारदुवाच भवस्तस्तु वृत्तमिदं भक्तवंशयो भवान्मता. सम्यक् कृतं च भवता पार्वतीमान् सेप्तुतं. कार्यं मतदृशं किञ्चित् कथनीयं तयवया विभो. मत्वा स्वयं सेवकं मां हि कृपां कुरु नमोऽस्तु ते. ब्रह्मोवाच इति स्तुतवया शम्भु शङ्करो भक्तवत्सला. प्रीत्युवाच प्रसन्नात्मा सादरं त्वां मुनीश्वरा. शिवोवाच विष्णु प्रभर्ति देवांश्च मुनिसन्द्वानपि ध्रुवम्. त्वं निमन्त्रणे मध्याग्नया मुनिस्नापि सर्वथा. सर्वम् आयन्तु सोहतासाः सर्वशोभासमन्विता. सस्त्रीसुतगणा प्रीत्या मम शासन् गौरवात्. नागमिष्यन्ति ये तवत्र मदिवाहोत्सवे मुने.
ते स्वीकायिना मन्तव्या मया देवादया खलु। ब्रह्मोवाच इति शाक्यं ततो धृत्वा भावं शङ्करवल्लभा सर्वाणि मन्त्रयामास तं गत्वा द्रुतं मुने। शम्भुकण्ठमागत्य द्रुतं मुनिवरो भवान् ददधूतयत्र सन्तस्थो तदाज्ञां प्राप्य नारदा शिवोऽपि तस्थोऽसोत्कण्ठ तददागमनलालसा स्वगणेशोत्सवे सर्वैर्नृत्यादिभिः सर्वतो दिशम् एतनैव काले तु रचयित्वा स्ववेशकम् आजगामच्युता शीघ्रं कैलासं सपरिषदा शिवं प्रणम्य सद्भक्तया सदार सदलो मुदा तज्ज्ञानाप्राप्य सन्तस्तो सुस्थाने प्रीतमानसा तथाहं स्वगरणाशु कैलासगमं मुदा प्रभुं प्रणस्तिष्ठं वै सा न ददहा स्वगणान्विता इन्द्रादयो लोकपाला आयुयो सपरञ्चिता तथैवालङ्कृता सर्वे सोतस्तवा सकलात्रिता का तथैव मुनयो नागासिदा उपुरसुरास्तथा आयुष परेपिः सोतस्वा मुनिमन्त्रता महेश्वरस्तदा तत्रागतनां च पृथक् पृथक् सर्वेषां मराध्यानां संस्कारं तवेदान्मुदा अथो तसवो महानास्ति कैलाशे परमोद्भुता नृत्यादिकं तथा चक्र्याथा योग्यं सुरस्त्रिया एतस्मिन् समये देवा विष्णुवादाय समागता यात्रां कारयितु शम्भोस्त्र त्रोषस्तेऽखिला मुने शिवाज्ञापस्तदा सर्वे मदीयमेति यन्त्रिता शिवकार्यमिदं सर्वं चक्रिक्रे शिवसेवनं मातरा सप्ततातस्त्र शिवभूषा विधिः परम् चक्रीरे चामुदा युक्ता यथा योग्यं तथा पुनः तस्य स्वाभिविको वेश्यो भूषा विधरभूतदा तस्येच्छया मुनिश्रेष्ठ परमेशस्य सुप्रभो इन्द्रस्य मुकुटस्थाने सानिध्यं मे करो तदा लोचनं सुन्दरं हासीत् तृतीयं तिलकमशुभं कर्णाभरणरूपो यो हि सर्पो प्रकर्तितो कुण्डले भवता तस्य नानारत्नाविते मुने अङ्गास्थिता सर्पात्तस्तदण्डाभरणानि च बभूवरिति तीर्मयाणि नानारत्नमयानि च विभूतरङ्गारो भूचन्दानि दिसमुद्भवा तदुत्कुलमुदिविव्ये गजचर्मादिसुन्दरम् ईदृशं सुन्दरं रूपं जातं वर्णाति दुष्करम् ईश्वरोऽपि स्वयं साक्षाद्वैश्वरं लब्ध्वान् स्वतः ततश्च सर्वे सुरपक्षदानव नागाः पत्सरो महर्षया समेत एवं सर्वे शिवसन्निधिं तदा महोत्सवा प्रचुरुहो मदान्विता सर्व ऊचु गच्छ गच्छ महादेव विवाहार्थं महेश्वरा गिरिजाया महादेव्या समाभिकृपां करु ततो विष्णुरुवादे चेदं प्रस्तवासदृशमवचा प्रणमे शङ्करं भक्त्या विज्ञानप्रीतमानसा विष्णुरुवाच देवदेव महादेव शरणागतवत्सला कार्यकर्ता स्वभक्तानां विज्ञप्तिं शृणु मे प्रभो ग्रहोत विधानां शम्भो विवाहस्य शङ्करा गिरीशसुत्या देव्या कर्म कर्तुमिहार्हसि तव्या च कर्मयाणे तु विवासे विदोहरा सा एवं हि तथा लोके सर्वं सुख्यातिमापुनुयात् मण्डपस्थापनं नान्दी मुखं तत्कुलधर्मता कार्यं प्रीतितो नाथ लोके स्वापयन् यशा ब्रह्मोवाच एवमुक्तस्तदा शम्भुर्विष्णो
परमेश्वरा लोकीचारिणी तो विधाना तच्चकार सहा अहम दानादनस्तेन सर्वमुद्दु योचितम् अपूर्व मुनिभिः प्रीत्या तत्र तत्कर्म चादरात् कश्यपो त्रिविष्टश्च गौतमो भाङ्गिरुणि गुरु कर्वो बृहस्पति शक्तिर्मदग्नि पराशरा मार्कण्डेय शिलापाको ऋणापाको कृतशमा आगस्त्य वचनो गर्ग शिलादोथ महामुने दधीचिरूपो नरस्ये भरद्वाजो कृतवर्णा पिपलादोत कुकुशा कौतसो व्यासाः संशियका एते चान्ये च बहवः आगता शिवसन्निधिं मया सुनोदित्रास्तत्र चुक्रस्ते विविधस्ति क्रियां वदोत विद्धिना सर्वे वेदागपारगः रक्षा चकुर्महेशस्य कृत्वा कौतुमङ्गलं श्रियजगुषामुक्तस्य तथा नानावेदाः परे मङ्गलानि च भूरिणि चक्रु प्रत्ययोरश किला ग्रहाणां पूजनं प्रीत्या च कुरुते शम्भुना मया मण्डलसुराणां च सर्वेषां विघ्नशान्तये तथा शिवा सन्तुष्टः कृत्वा सर्वं यथोचितं लौकिकं वैदिकं कर्म ननाम च मुदां द्विजान् अथ सर्वेश्वरो विप्रान्द्रेवान् कृत्वा पुरासरान् निसंसारमुदा तस्मैत् कैलासत्पर्वतोत्तमात् गहीकुलास्कुन्धरं शम्भुः ससतो मुदान्विता देवे स दिवे जयश्रैः नानालीकारा प्रभु तदोतसवो महानासीतस्तु देवादिभिः कृता सन्तुष्टर्थं महेशस्य गानवाद्येषु नृत्यका इति श्री शिवमहापुराणे द्वितीयामृतसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे देवनिमन्त्रण देवागमन शिवयात्रावर्णनं नामैकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।